Hey, do you know what is the biggest problem in the entrepreneur and the business owner hands while they are talking about the goods and service tax? In their business, the biggest problem in managing the compliance, particularly in goods and service tax, is the availment of the input tax credit. Now, what is the input tax credit? When you are purchasing something from the supplier, there is one tax component in the invoices. That tax component you are availing as an input credit. Now, you cannot purchase something from the supplier and simply go and avail the input as credit. There are certain restrictions and conditions. And if you are availing the input as credit basis of what you have purchased from the supplier, it means you are doing a big crime. You are doing a big crime. Now, the certain conditions and restrictions that you have to be fulfilled while you are going to take the input as credit. So this is very important that you as a taxpayer must fulfill the conditions, because while you are in a business, my dear friend, ladies and gentlemen, availing the wrong input as credit is allowing to your business the more and more tax liability over the period of the time. That is how it is important for you. In any taxation system, there are two types of tax. The one is the outward tax, which are levy on the sales and services. So while you are selling something to your customer or rendering services to your customer, there is a outward tax. And when you are purchasing something from the supplier, there is one tax component that you are paying to the supplier. That is the inward tax. So now, when you as an entrepreneur or as a business owner thinking about the outward tax, there is not a big problem, because this is your liability you are paying to the government, where you have the more control. And if you are not paying, then you will be penalized. But when we talk about the input tax credit, where you are purchasing something from the supplier, and this is the responsibility of the supplier to make the payment of those tax to the government. Here the problem is that you have to make dependent on the supplier. And now if supplier is not complying with the goods and service tax, you will have the bigger problem. So now you need to understand that outward tax, that is in your responsibility to make the payment and do the compliances. But while it comes to know about the input tax credit, it is the supplier responsibility to fulfill all those GST related compliance. And you have to wait whether supplier has complied or not. If supplier has not complied, he will not get to avail the input as credit. Now this is the bigger problem. So while you are talking about the outward tax liability and inward tax liability, now you have to focus on inward tax liability, because this is going to impact to your working capital. This is going to impact to your working capital, and you are going to get the two cost. The one that you are paying the tax amount to your supplier, and the second one that you are not able to avail the input as credit. सो दोस्त, यहां पे आपको बहुत ही सावधानी से काम करनी पड़ेगी। इनवर्ड टैक्स में जहां पे आपने सप्लायर से परचेज किया एंड आपने टैक्स का कंपोनेंट भी सप्लायर को पे किया, बिकॉज यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम द सप्लायर, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट। आपने पे कर दिया, बट सप्लायर ने टैक्स की लायबिलिटी गवर्नमेंट को नहीं पे करी, and because supplier has not paid, supplier has not complied, आपको टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू एज अ टैक्स पेयर, एज ए एंटरप्रेन्योर और ए बिजनेस ओनर, कि आप अपने टैक्स के कंप्लाइंस, जीएसटी की कंप्लाइंसेस कैसे करते हैं। क्या आप अपनी जीएसटी की लायबिलिटी विदाउट रिकनसाइलिंग ऑफ द इनपुट क्या आप लेते हैं, या फिर आप कैसे करते हैं, यह आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर वर्किंग कैपिटल। सो नाउ व्हाइल वी टॉक अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, what are those conditions that you have to be compulsory follow,
before you availing the input tax credit while you are going to discharge the outward tax liability or net of tax liability through GSTR 3B. आप करते हो ना GSTR 3B के थ्रू आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी उसमें इनपुट एडजस्टमेंट एंड नेट लायबिलिटी आप पे करते हो। जब आप नेट लायबिलिटी पे करते हो, आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पे एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या आप कंप्लायंसेस के साथ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर हियर दैट व्हाट आर दोस कंडीशंस दैट यू एज एन एंटरप्रेन्योर एज ए बिजनेस ओनर और एज ए टैक्स पेयर मस्ट फुलफिल so that you will have a lesser chances of notices or assessment. So ये conditions क्या हैं? Input tax credit is a bigger challenge for the government because government को tax चाहिए। तो supplier अगर tax नहीं पे करता है तो वो recipient और buyer को control करता है कि अगर recipient buyer को भी हम input की benefit नहीं देंगे अगर supplier ने tax नहीं पे किया। In some cases सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया बट उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया, अगेन यू हैव ए प्रॉब्लम, आपको टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लायर ने GSTR 1 भी फाइल किया, 3 भी फाइल किया, बट आपके इनवॉइसेस को उसने GSTR 1 में शो नहीं किया, आपको इनपुट टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलेगी। ये क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज ऑफ दिस 6 कंडीशंस दैट यू हैव टू फुलफिल। नाउ मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं व्हाट आर दोस कंडीशंस दैट यू हैव टू फुलफिल एंड यू शुड नो। बिकॉज बिजनेस में जैसे आप फोकस करते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, अपने प्राइसिंग के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसी तरीके से आपको टैक्स के कंप्लायंसेस के ऊपर फोकस करने पड़ेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So now coming to the point, what are those conditions that you have to be fulfilled before you are going to take the input as credit? That is more important. So when GST was introduced, there were 4 conditions, and with that 4 conditions, if you fulfill, you can be able to take the input as credit. So what was the 4 conditions? And these 4 conditions were applicable till 31st December 2021. What are those 4 conditions? As a buyer, you should have the tax invoice copy. As a buyer, you must receive the service or goods. Supplier must comply and pay the tax liability to the government. And the 4th condition is the buyer must file the GST return regularly. So these were the 4 conditions and these are the very simple conditions कि as a buyer आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, आप गुड्स और सर्विस आप रिसीव होनी चाहिए, सप्लायर टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए एंड एज ए बायर आप टैक्स का कंप्लायंसेस, टैक्स के रिटर्न रेगुलरली फाइल करनी चाहिए। ये 4 कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं देन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सो दीज वेयर applicable till 31st December 2021। जब इस 4 कंडीशंस की बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या थी? चारों कंडीशंस हमने फुलफिल किया और हमने टैक्स का बेनिफिट लिया एज ए बायर। नाउ इट इज गुड, बट द गवर्नमेंट जिनको काफी सारी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस, बिकॉज सप्लायर ने टैक्स का कंप्लायंसेस नहीं किया या पे किया, पार्शली पे किया। सो नाउ द 5th conditions that got introduced from 1st January 2022. And what was the 5th conditions? Okay, as a buyer, your input tax credit must be reconciled, match with the GSTR 2B, that is the auto-populated register for the buyer or recipient. So till 31st December 2021, you were had the GSTR 2A, जो कि कभी भी कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हुआ, कभी भी कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हुआ। एंड बिकॉज द गवर्नमेंट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस completely, the 5th conditions through section 16 subsection 2 clause AA got introduced from 1st January 2022.
उस पर उन्होंने क्लियरली बता दिया आपको कि यस, अब आपकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब ये मैच एंड रिकनसाइल विद जीएसटीआर 2B होगी. So now you as a taxpayer, as a entrepreneur and the business owner, you have to think while you are going to furnish the GSTR 3B, you have to be very, very, very careful that whether you have reconcile, match the input tax credit with the auto-populated register that you have received. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए. And if you have not reconciled, because as I told that this has been applicable from 1st January 2022, so most of the entrepreneurs have started to reconcile and getting all those input only that is matching with the GSTR 2B. And अगर आप अभी भी इसको शुरू नहीं किए, then my dear friend, ladies and gentlemen, start this immediately, because might be today you are not getting the notices from the department, might be you are creating more profit today, but what would be happen tomorrow? You will have the more notices and you will have to be pay the excess input tax credit that is not matching in your GSTR 2B with the interest and other penalty as well. तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. जब आप रिटर्न्स की बात करेंगे वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि जब आप GSTR 9 फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखानी होती है. व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज अवेलेबल इन GSTR 3B, व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज अवेलेबल इन GSTR 2B. आप नहीं बच सकते. सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू बी कंपल्सरी रिकनसाइल मैच बिफोर यू pay the net tax liability to the government through GSTR 3B. That is more important. So with these 4 conditions, the 5th conditions got introduced from 1st January 2022, and most of the entrepreneur and the business owner or the taxpayer have started to fulfill those conditions before they start to availing the input tax credit in their GSTR 3B. यहाँ तक तो ठीक था. GSTR 2B. So as a buyer, मेरे पास 100 रुपये का GSTR 2B में अगर ITC आ रहा है, मैं पूरी 100 रुपये अवेल नहीं कर सकता. उसमें से मैं वो इनपुट अवेल कर सकता जो 4 कंडीशंस प्लस ये फुलफिल कर रहे हो. फॉर एग्जांपल 100 रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके इनवॉइसेस नहीं आ रहे हैं. आई मीन जो आपने इनवॉइसेस बुक किए हुए हैं अपने सिस्टम में, वो इनवॉइसेस उसके अंदर है ही नहीं. तो आप इनपुट कैसे ले सकते हैं? Are you getting my point? You cannot avail those input against which you do not have the invoice. If you do not have the invoice copy, you have not recorded that invoices, you cannot avail those input, because what is the conditions under section 16 subsection 2 that you must have tax invoice copy. You must receive the goods and services. Here the 2 conditions you are not going to meet. So you have to check that whatever the invoices that are matching and reconciling with your GSTR 2B, to the extent you would be able to take the input tax credit only. That you have to be very, very careful. Because what happened, most of the entrepreneurs also realizing that if the input tax credit is available in our GSTR 2B, what is the problem? We can go and avail all those input without reconciling with the input register that you have in your system or in your records. So it is very important. The 5th condition is good. And the ITC, which is dependent on GSTR 2B with effect from 1st January 2022. That is good. It means is your ITC is dependent on GSTR 2A. Can we see that? Can we say that our ITC is dependent on GSTR 2A? No. Because GSTR 2A, there is nothing, but it is only the facilitations part only. ये आपको इनपुट को रिकंसाइल करने के बाद तो करता है कि GSTR 2A से आपको इनपुट रिकंसाइल करके आपको बैलेंस लेनी है, बट ये कहीं पे भी नहीं है. ये कहीं पे भी नहीं है कि आपको रिकंसाइल करके ही लेना है. सो whatever the input that you have availed till 31st December 2021, you can be challenged to the department that GSTR 2A is only the facilitations documents, and it is not compulsory and written anywhere in the law that your input must be reconciled with GSTR 2A. Meanwhile,
If you go to the goods and service tax, the introductions of goods and service tax, you go and see जब GST इंट्रोड्यूस हुआ था, GST your return is the auto populated return statement, जहां पे ये बातें की गई थी कि ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम होगा, बट इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड. जब ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं तो जीएसटीआर 2A का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. जीएसटीआर 2A का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं, बिकॉज वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द जीएसटीआर 2A, यू जस्ट गो 5 years बैक जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम, दैट द सप्लायर फाइल द जीएसटीआर 1 and the information is going to be auto populated in GSTR 2A for the recipient or buyer. Recipient, after modifying the required detail, file GSTR 2, and then the auto populated information is going to be auto populated in GSTR 1A of the supplier, and supplier will accept or reject those changes that the buyer has made and file GSTR 3. दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम. तो अब जब बात करेंगे यहाँ पे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 1A एंड देन जीएसटीआर 3, ये सिस्टम तो कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं. तो जब ये सिस्टम ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वेयर इज द क्वेश्चंस ऑफ जीएसटीआर 2A, वेयर इज द क्वेश्चंस ऑफ जीएसटीआर 2A. सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ टैक्स पेयर मस्ट नो कि आपको जीएसटीआर 2A से कभी भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं है. देयर आर सो मेनी डिसीजंस फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहां पे इस चीज को बताया गया है कि जीएसटीआर 2A आपके लिए फैसिलिटेशंस डॉक्यूमेंट ओनली है. आपकी इनपुट अगर जीएसटीआर 2A से मैच नहीं कर रही है या फिर आपने इनपुट विदाउट रिकंसाइलिंग विद जीएसटीआर 2A अगर आपने अवेल करी है, इट डज नॉट मीन दैट द डिपार्टमेंट कैन इशू द नोटिस टू यू एंड गेट कलेक्टेड ऑल दोज द शॉर्टफॉल. नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट. So it is very clear, and that's why the government has implemented this, the GSTR 2B, and it is compulsory applicable with effect from 1st January 2022. गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर दिया बिकॉज जैसे ही गवर्नमेंट 2B इंप्लीमेंट किया एंड ये एक्ट में इन्होंने बताया कि योर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन GSTR 2B. अगर आपने 2A पे नहीं किया फेयर इनफ 31 दिसंबर तक आप फाइट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट फाइट आफ्टर 31 दिसंबर. सो इट मीन्स फ्रॉम 1st January 2022 you have to be compulsory reconcile, compulsory match all those input tax credit with GSTR 2B. और अगर आपने नहीं रिकंसाइल किया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ. सो दिस इज द 5th conditions that got introduced from 1st January 2022. यूनियन बजट 2022 पिछले साल का, दे हैव नोटिफाइड सम अदर कंडीशंस एंड दैट हैज बीन एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2022. व्हाट इज दैट? GSTR 2B दैट इज बीइंग एप्लीकेबल फ्रॉम 1st January 2022. बहुत अच्छा है. अब इनपुट तो मुझे पूरा मिलेगा, एटलीस्ट जितना GSTR 2B में है उस इनपुट को तो एटलीस्ट लें. फेयर इनफ. 1st October 2022, government again notified through the Union Budget 2022, जो कि applicable है 1st October 2022 से. गवर्नमेंट यहाँ बोलता है yes सज्जन, you can avail the input tax credit that what is available in GSTR 2B, but from 1st October 2022 you cannot avail all input. Now it is a question for me that if supplier has complied, it is coming in my GSTR 2B, then what is the problem? Why as a taxpayer, as a recipient or buyer cannot avail the input tax credit if it is coming in GSTR 2B? Now government said, Sajjan, yes you cannot take GSTR 2B. It is good that you are availing the input tax credit, but now the conditions here that got introduced from 1st October 2022 is that the input tax credit which is auto populated in GSTR 2B
should not be restricted as per section 38. Should not be restricted as per section 38. Now what is section 38? Section 38 को completely substitute कर दिया गया है from 1st October 2022. So the section 38 is completely substitute. Now what section 38 says? That the input tax credit which is auto-populated in GSTR 2B is now bifurcated into two parts. Bifurcated into two parts. So GSTR 2B में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर और रेसिपिएंट के लिए अवेलेबल है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है. Now what is those two category? The input tax credit which is auto populated in GSTR 2B and available for credit. It means available in GSTR 2B and eligible. The second one here, the GSTR 2B, I mean ITC is available in GSTR 2B and not eligible. So ITC which is auto populated in GSTR 2B is now in the two parts, the ITC under 2B eligible, ITC under 2B not eligible. So now again as a buyer or recipient, you have to be very careful. GSTR 2B which is auto populated the statement for the recipient or buyer, अब उसमें आपके दो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरीज में जहां पे आप कंप्लीटली इनपुट ले सकते हैं, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन. बट इन द सेकेंड कैटेगरीज आप इनपुट नहीं ले सकते. सो इट मीन्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2B, even though as a buyer or recipient you cannot avail the input tax credit. And the input tax credit, why you cannot avail? It is because of 6 restrictions, and it is 6 restrictions on the supplier side. So now you need to understand as an entrepreneur or as a business or as a taxpayer कि input tax credit अगर आपका supplier compliance नहीं करता, because these conditions are going to be on the supplier side, supplier का failurance का कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर निकलेगा. सप्लायर फाइल नहीं किया आपको पेनलाइज की जाएगी, सप्लायर ने कंप्लायंसेस नहीं की आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड फ्रॉम 1st October 2022. इवन इट हैज ऑलरेडी अप्लाई. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस एंड व्हाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस वर्ड, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है. आप अपने बिजनेस में देखिए कि आपका tax persons, whether the persons who are managing the tax, वो इस चीज को देख रहा है या नहीं देख रहा है, that is more important. So now the 6 restrictions on the supplier side, even though the input is available on the GSTR 2B, you cannot avail the tax credit. What are those 6 restrictions? What are those 6 restrictions on the supplier side? क्योंकि supplier fail करता है आपको रिटर्न्स में क्रेडिट नहीं मिलेंगे. व्हाट आर दोस 6 रिस्ट्रिक्शन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, एनी न्यू रजिस्टर्ड पर्सन in goods and service tax. So any new registered persons in goods and service tax, and you have purchased from the new registered supplier, the input tax credit which is auto populated in your GSTR 2B, even though you will not able to take the input tax credit. So अगर आपने कोई न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर से अगर कोई ट्रांजेक्शन्स करी है, कुछ परचेज करा है आपने, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ऑल्दो इट इज अवेलेबल इन GSTR 2B. Now government intention is very clear. Government intention is very clear. If you are a genuine supplier and genuinely want to do the business, you will not suspend or shut down your business, or you will not do the business with an intentions to shut down in near future. कुछ बिजनेस होल्डर्स करते हैं कि वो पास ऑन करने के लिए 1 रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन, 10 रजिस्ट्रेशन. अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा. सो द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन्स and you have purchased from that persons, your input tax credit is restricted for the specified period, and that period has not been defined. Might be it would become through the rules. So now specified period
कितना पीरियड के लिए अभी नहीं कंफर्म हुआ है. द सेकेंड रिस्ट्रिक्शन that the supplier has defaulted in payment of tax and such default is continue for the specified period. सप्लायर ने टैक्स का डिफॉल्ट किया, उसने टाइमली पे नहीं किया और एक स्पेसिफाइड पीरियड तक उसने डिफॉल्ट किया हुआ है. Even though input tax credit is available in your GSTR 2B, you will not able to take the input tax credit. The third restriction, supplier has filed the outward tax liabilities, pay the outward tax liability, file the GSTR 1, and the outward tax liability that is available in GSTR 1 is exceed the outward tax liability that has been paid through GSTR 3B. अगर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी GSTR 1 में 3B के आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, in that case and the amount that has been prescribed, that amount has been the specified prescribed limit, and if it is exceed that prescribed limit, again the input is available in your GSTR 2B even though you are not able to take the input tax credit. इसका मतलब कि अगर आपका GSTR 1 में आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी लेट से 2 लाख रुपीस और आपका GSTR 3B में आपने उसको 1,90,000 या 1,80,000 दिखाया हुआ है, तो ये जो डिफरेंस हुआ ना, इस डिफरेंस का अगर ये डिफरेंस स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ए बायर को नहीं मिलेगा. सो आपकी रिटर्न्स का फेल्यूरेंस बायर के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस. So this is the third restrictions. The fourth restrictions is that the input tax credit which you have availed as a supplier in your GSTR 3B input tax credit, and that amount that you have availed is more than the GSTR 2B and the amount is exceeding the specified prescribed amount. So again the buyer or recipient will not able to take the input tax credit. Now supplier 3B में input tax credit अवेल किया जो कि 2B से ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है जो स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे भी ज़्यादा है, तो फिर बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई दिस क्लॉजेज और ऑन द सप्लायर साइड आपको नहीं बचने देगा, आप नहीं बच पाओगे. हाउ यू हैव द एक्सपर्टीज, सारी एक्सपर्टीज आपकी धरी रह जाएगी, आप कंप्लायंसेस कर ही नहीं पाओगे. एंड दिस इज नॉट लाइक ए सर्विस टैक्स यू हैव द मैनुअल इंटरवेंशन कि चलो ठीक है फाइल कर दिए. हियर एवरीथिंग इज कंट्रोल थ्रू द GSTN पोर्टल. पोर्टल तो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है. डिपार्टमेंट के पास जाओगे क्या करोगे? They do not have authority to open or amend the portal. So are you getting my point? You have only one choice, that do the compliances. Now the fifth compliance, you have to be understand very carefully. The fifth compliance is here on the supplier side, that supplier must discharge the outward tax liability subject to section 49 subsection 12. Section 49 subsection 12 ये आपको बताता है कि आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी एज पर 86 रूल 86B के थ्रू आपको करनी है. सो 49 सबसेक्शन 12 रीड विथ 86B एंड व्हाट 86B से, द 86B इज रिस्ट्रिक्टिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. 86B सेज दैट यू कैन बी एबल टू अवेल up to 99% of the input tax credit that is available in your electronic credit ledger. इसका मतलब जितना भी इनपुट अवेलेबल आपके ECL में 99% तक आप टोटल जितना भी लायबिलिटी बनता है आप उतना तक अवेल कर सकते हो. 1% तो आपको डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा. Now if you are not fulfilling these compliances, then again because supplier has not fulfilled, now the buyer will get the consequences. And if the GSTR input is available in your GSTR 2B, even though you are not able to take the input tax credit. And the sixth conditions, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल दिया कि बाकी इसके अलावा कुछ भी अगर होगा उन सबको भी कवर कर देंगे. अब क्या होगा, that government know, that department know. So these are the 6 restrictions on the supplier side, and supplier has to be
compulsory fulfill this so that the buyer or recipient can be able to take the complete input. Now you need to understand there's 6 conditions. The fourth condition, the first 4 conditions were applicable till 31st December 2021. Fifth conditions that got introduced from 1st January 2022. So now you have to read the first 4 conditions plus 1 conditions. This fifth conditions has been applicable from 1st January 2022. The 6th conditions has been introduced from 1st October 2022. तो now अब आपके पास 6 conditions हैं. अगर आप इन 6 conditions को पूरा करते हैं तभी आप input tax credit ले पाएंगे, otherwise नहीं ले पाएंगे. So this is important that you have to be now understand from your business point of view, because it is going to help you to create the liquidity, the sound liquidity. And what happens if you are not fulfilling this? Then you have the dual cost. One cost that you are paying to your supplier, and the second cost that you are not able to avail the input tax credit as per. So that you need to understand. You need to understand. आप डबल कॉस्ट देना चाहते हैं कि आप प्रॉपर इनपुट रिकंसिलेशन करके, आप प्रॉपर कंप्लायंसेस करके अपने आप को बचाना चाहते हैं. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई टू नो योर सप्लायर कॉन्सेप्ट. अपने सप्लायर को जानिए कि आपका सप्लायर कंप्लायंसेस करता है. अगर करता है तो आप धंधा कीजिए, करता नहीं है मत धंधा कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर अक्रॉस इंडिया who are not fulfilling the compliances, and they should know the consequences. If they are able to know about the consequences, they start to fulfill the compliances, they will start to impanel. They will start to impanel those all, and you as a buyer would be get to register those supplier. So now as an entrepreneur, as a taxpayer, you have the very, very, very important information, this, the ITC claiming. And while you are claiming the ITC, you have to make sure that you are fulfilling these 6 conditions or restrictions, and then start to avail the input tax credit. It is going to help you with the larger opportunities in your business. And you will see that with these conditions, the structures of supplier and buyer is going to be automatic match. ऐसा ये मॉड्यूल बन रहा है कि आने वाला समय में ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे और चांसेस ऑफ लिटिगेशंस काफ़ी कम हो जाएंगे, बिकॉज इनपुट उनको मिलेगा नहीं, और इनपुट उनको नहीं मिलेगा मीन्स बायर को नहीं मिलेगा, बायर उसके साथ धंधा नहीं करेगा, तो उसका धंधा बिकॉज नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लायंसेस करना शुरू कर देगा. सो दैट यू नीड टू understand as a buyer, you have to be penalized to do supplier, although the supplier is a supreme supplier for you, but if he is not fulfilling the compliances, you have to be restrict to yourself to choose some other alternative to make it a very, very wide range of your business opportunities, so that the input tax credit you would be able to avail, and you would have the sound liquidity because of the input tax credit that you are going to avail. So it is very important. Now you as a taxpayer entrepreneur need to understand, apply this clearly in your business and find those amount of opportunity. ये 6 restrictions आपको देख करके आपको इनपुट टैक्स के क्रेडिट लेने हैं, और अगर आप लेते हैं आपको सुकून मिलेगा, आपको कंप्लायंसेस की बेनिफिट समझ में आएगी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम योर बिजनेस विल स्टार्ट टू गेट मोर स्केल, because you are fulfilling the compliances in goods and service tax. So are you going to do that? Are you going to do that? If you are able to do that, you will have the more peaceful and the more profitable part in your business with the compliances. So that is going to be help you more. Start to fulfill the compliance and get more business opportunities around the world. This is Sensing signing out. Until we meet again, thank you very much.